and I never knew that Yamraj is a famous personality. What steps can be taken to end poverty? I accept failure and criticism with full-on positivity. I would always regret sacrificing my dream and my passion. मु स्वागत करी आमर 4 जण कंटेस्टेंट जो माने ए मुहूर्त रे मंच रे अछंती. वी हैव साई स्मिता फ्रॉम कटक, बहुत बहुत स्वागत. वी हैव अर्पिता फ्रॉम बालेश्वर. आम सहित अछंती आशीषा साहू फ्रॉम बरहमपुर एवं आम सहित अछंती पंछी फ्रॉम बरहमपुर. बहुत बहुत स्वागत करबी. आ डेरी करबा नहीं, एबे कार्यक्रम को आमे आगो को बढ़ेवा. How do you deal with failure and criticism? Stop. I accept failure and criticism with full-on positivity. These are the key points I need to improve to gain success. I need to have a backstory of failure while giving a vote of thanks after receiving success. Thank you. Namaste, judges. We all know failure is the pillar of success. Every failure in my life had been a source of inspiration for my further steps. Every time I fall, I know I can wake up again because I know I have my parents and friends there at my back to pick me up. And criticism is a part of life. I believe I can endure it and begin my steps for success. Thank you. मो निजको गोटे सक्सेस पर्सन रूप देखा चाहे. मो लाइफ सॉरी मो एतिक ही लिखी पाई सॉरी. फेल्युअर मो पाई वन टाइप ऑफ सक्सेस बिकॉज जदि फेल्युअर न था मु आज ओडिशा क्वीन रो मंच रे न थांती. कारण फेल्युअर मो भितर जो कॉन्फिडेंस जो एनर्जी जो बिलीव आनी से मु आज ये मंच रे ठिया बिकॉज ऑफ माय सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ माय बिलीव एंड सो मेनी फेल्युअर दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे. थैंक यू सो मच. एही मंच रे अछंती आउ 4 जण कंटेस्टेंट से माने होचंती अंकिता फ्रॉम कटक, हम सहित अछंती ऐशिकी फ्रॉम बालेश्वर, हम सहित अछंती इशिका फ्रॉम बरहमपुर, हम सहित अछंती सुनीता फ्रॉम बरहमपुर. सो तुमको बहुत बहुत स्वागत. खाली तुम ओडिशा क्वीन जीतिल, खाली तो नाच गीत नहीं तो आपण मैंने एम्बेसडर्स भी हेबे. यू विल बी रिप्रेजेंटिंग फीमेल एज ए क्लास ऑल्सो. सो जदि तुमको चांस मिलला टू मीट दी चीफ मिनिस्टर दी मिनिस्टर्स, कौन सोशल मैसेज और सोशल थिंग्स यू वांट टू डिस्कस विद द लीडर्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
from Ankita. So my answer to the question is, I will definitely love to discuss some progress in our industry line because there are already many things the CM is doing for the society. Coming from the platform of Odisha Queen, I will like to discuss with him that you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and definitely much beautiful than your imagination. Thank you. My answer to the question is, if I meet Chief Minister, then I would discuss about the child education at Bastis, where they don't get proper education, as there are still many places. Thank you. आपण माने जेमिति पचारिले लोक मानकर चिंताधारा मेसेज केमति जीवो तो लोक मानकर चिंताधारा ऊपर जीवो. It's okay. Next. If I get a chance to meet with CM after winning, as this platform is all about women empowerment, so it's my responsibility to empower them. So I will discuss for criminalizing marital rape, as women are the creator of this world. It's their right to feel safe everywhere, even it's their home or anything else. Thank you. आम सहित आउ 4 जन कंटेस्टेंट जोड़ी होती एंड मुझे स्वागत करी. आम सहित अच्छा शर्मिष्ठा फ्रॉम कटक, आम सहित अच्छा आर्यन हर्षिता फ्रॉम बालेश्वर, आम सहित अच्छा उत्कलिका फ्रॉम बरहमपुर एवं आम सहित अच्छा करिश्मा पात्र फ्रॉम बरहमपुर. समस्त को बहुत बहुत स्वागत. आशा करुच्ची ऑडिशन अपेक्षा मेगा ऑडिशन रे निजको आउ टिके प्रिपेयर करके आसीथिबे, आउ टिके ग्रूम हेके आसीथिबे. What does being a modern woman mean to you? Modern woman means मो हिसाब रे कॉन्फिडेंस गोटे मॉडर्न वुमेन कैरी करबा दरकार, ता पाखरे डिसिप्लिन रहबा दरकार. एमती नहीं जे मॉडर्न मीन्स अरे ओवर स्मार्ट ये सब देखेबा. नॉट अबाउट मॉडर्न मीन्स ओनली मेकअप या ड्रेसिंग सेंस ताको आमे नहीं कि आमे जन को कहि परिबानी से जो मॉडर्न वुमेन हेल्प इच अदर, माने अन्य मानक पय इंस्पिरेशन होउथबा, रोल मॉडल होउथबा, सेमती जने पर्सन को ही आम माने मॉडर्न वुमेन कहि परिबा. एनकरेज करूथिबा दरकार, अन्य मन को हेल्प करबा पई कि सेटा कि मो लिखि छै. आमे केवल आम ड्रेसिंग सेंस रे मॉडर्न हेले दैट डजंट मीन वी आर मॉडर्न. वी शुड आल्सो बिहेव लाइक ए वुमेन. वी आर रियली मॉडर्न टू सो दैट वी आर रियली मॉडर्न, as we should never forget our religion, culture in this modern society, so that we will call ourselves modern. So we should always mean that we are a cultural with modern. Thank you, ma'am. आग काल नारी मानक ए सब सुविधा मिल नथला, जहाँ कि ए जुगरे ए सब सुविधा मिल पारुचे. मॉडर्न वुमेन मीन्स गोटे वुमेन निजको केमिति ए समाज आगे रिप्रेजेंट करि पारुची एंड मैन मानक आग को जाइकरी ए वर्ल्ड सहित लड़ी निजको मॉडर्न वुमेन प्रूफ करि पारुची. Thank you so much. ओडिशा क्वीन सीजन 4 मेगा ऑडिशन एंड आपण माने समस्ते या को देखि पारुछन्ते आपण मानकर प्रिय चैनल तरंग म्यूजिक रे. वेल आम गहण रे आउ 4 जण कंटेस्टेंट ऑलरेडी आसिक पहुंची होती. आमे तांको स्वागत करबा. आम सहित अछंती नीतिशा फ्रॉम बरहमपुर. बहुत बहुत स्वागत नीतिशा तुमको एई मेगा ऑडिशन रे. आमे स्वागत करे पई चाहबू
सोनालिका फ्रॉम कटक तुमको बहुत बहुत स्वागत आम सहित अच्छा भास्वती फ्रॉम बालेश्वर अनेक अनेक आम स्वागत करुचु मेगा ऑडिशन को आम स्वागत करूँ करिश्मा साहू तुमको बहुत स्वागत 4 जन कंटेस्टेंट अच्छा पूरा सजधज के रेडी होकर आसते आम एमती परफॉर्म करूँ आम जूरी देखिकी रही So your question is, what steps can be taken to end poverty? We can end poverty by some of the following points: providing employment and jobs, basic healthcare treatment, education to the rural areas and rural people, establishment of job opportunities and other opportunities which they really need, and funds to the poor. And we have to arrange some of the basic needs, what they need and what they are lacking now. Thank you. Any education and for the job which is most needed to end this poverty, first thing important is education, and the infrastructure of education in rural areas need to develop, and education is very important for one's thinking, mindset and outlook. It is definitely the education which will help the person to move ahead in life and get a job and get rid of this poverty. More schools in the rural areas needs to be developed, and special attention to each and every student by the teachers. So the selection of teachers must be nice so that the children would get the education and have that modern outlook, and in future he will definitely develop into a great human being and help others also to end the poverty. We have to first know the root cause of poverty. Secondly, the category of people who are suffering from the poverty, and what are the basic requirements to abolish the poverty in the people group. And after that, knowing these categories, we will recheck the implementation are proper or not, are they properly getting the proper steps that we have taken. And that's all. Thank you for the question. आमे निजे किछि गोटे भल काम करिबा तापर जाय कि आमे गरीब मानक पय किछि भी मध्य करि परिबा बस एतिक ही म लिखिछि आम सहित आउ 4 जन कंटेस्टेंट जोड़ी होइचंती सेमाने होउचंती वैशाली फ्रॉम कटक ताको हमें बहुत बहुत स्वागत करूछु एई मेगा ऑडिशन रे आम सहित अछंती रूपाली फ्रॉम बरहमपुर तुमको अनेक अनेक स्वागत आम सहित अछंती राजेश्वरी फ्रॉम बरहमपुर आम ताको बहुत स्वागत करूछु राजेश्वरी वेलकम टू द शो मु स्वागत करी तासा पटनायक फ्रॉम कटक ताको बहुत बहुत स्वागत वेल ताको पर जो स्माइल अच्छी से स्माइल कही दूची समाने केते जलवा देखेबा केते बढ़िया वर्क करिवे फैशन फ्लोर रे सो ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट एंड ओवर टू आवर जूरी थैंक यू सो मच
So my question is, if you ever regret in your life, if you sacrifice all your dreams and passions and instead become a homemaker. Okay, start. मो आंसर होची ना मु केबे भी रिग्रेट करिबिनी कारण हाउसवाइफ होबा गोटे बहुत भल जिनस फर्स्ट पॉइंट होची मु गोटे झियो गोटे बोहू हेबी गोटे माँ हेबी बाबा मांकर सेवा करी एवं मो स्वप्न को मो पिला मानक माध्यम रे पूरा करबा पई चेष्टा करी आउ गोटे हाउसवाइफ हैला परे जदि केबे चांस मिले ताले हाउसवाइफ हेकिना मो ड्रीम को मु पूरा करबा पई चेष्टा करी आउ निजर स्वप्न को पूरा करी. My answer to this question is no, I will never regret because I have seen my mother who has sacrificed for us. I believe it's an element of love and care, and we can show through this activity. I believe love, care, and support is more important, much more important factors. Thank you. ना फास्ट मु मो ड्रीम को सक्सेस करी उसके तापर मु निजर हाउसवाइफ हेबी जिते मु ट्राए करी भल हम ड्रीम सक्सेस है ऑटोमेटिकल से सब क्लीयर हो. I would always regret sacrificing my dream and my passion, as those are the things that give me hope that I'm something unique, something different from others. Losing them means losing myself. Thank you. Well, mega audition ले चली जबरदस्त एंटरटेनमेंट एथि सहित चारि जण कंटेस्टेंट आम सहित अछंती स्वयं श्री सड़ंगी फ्रॉम कटक गोटे चौदह क्लब माध्यम आम स्वागत करवा. आम घर अछंती अनन्या विश्वाल फ्रॉम कटक बहुत बहुत स्वागत अनन्या. आम सहित अछंती पूजा रानी राउल आम अनेक अनेक स्वागत करुचु से कटक रु. आम सहित अछंती सुश्री संगीता फ्रॉम कटक. वेल हसरू जना पड़ुଛି ସେମାନେ केते उत्साहित अछंती एई मेगा ऑडिशन रे शामिल हेगी. If you could be somebody else besides yourself, then who would you like to be? And choose a famous personality. I don't want कि मैं अपनी मम्मी का लाइफ जीना चाहती हूँ या चाचा चाची का. So it has to be a famous personality. Time's up. मो अर्चिता साहू को भाया हेबी तांको भाया बड़ हिरोइन हेबी. मोर छोट बड़ स्वप्न हिरोइन हेबार. आ अर्चिता मैम गोटे बहुत बड़ पैजेंट विनर, even very famous in Hollywood and even Bollywood. Well, I would like to choose to be Hanas Kaur Sandhu. She is the bestest. I believe she is the inspiration to all the youngsters. Her words are lead. Then ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟମରାଜ, ବଟ୍ କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ସଫଳତା ଲୁଚିକି ରହିଛି. ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବଟ୍ ମୋ ସଫଳତା ହିଁ ମୋ ମାମା ବାପା. ଆଉ ୟମରାଜର ଦୂତ ହେଇକି ମୁଁ ୟମରାଜକୁ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି କି ମାମା ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ. So if I could be someone else beside me, then she could be Priyanka Chopra. As she is a common girl and I am a common girl too. As a common girl, she inspires a lot. Thank you. Thank you, girls.
सो मत समस्त आंसर टू यमराज वाला आंसरटा टिके यूनिक लगिला एंड आई नेवर न्यू दैट यमराज इज अ फेमस पर्सनालिटी दैट वाज लाइक तुम्हारा इंटेंशन को मैं अप्रिशिएट करी इट वाज नाइस एनीवे थैंक यू गर्ल्स एंड बेस्ट ऑफ लक